everybody, a very good afternoon. How are you all doing? Welcome to Unacademy. Let me once confirm that am I audible and visible to you? Okay, everything is working fine. So welcome to Unacademy and talking about myself, a brief introduction. मेरा नाम सुरभि है and I'm a PhD student at IIT Guwahati. I have done my master's in biotechnology from KIIT University and I have qualified CSIR NET in June 2019 and also I have qualified GATE in 2019 and 20 and I have qualified examination JJBLs that it is an examination that is conducted by NCBS and TIFR in order to get admission in PhD. अगर आपको TIFR या फिर JJ या फिर आपको NCBS, आइजर, नाइजर ये सारे कॉलेजेस में अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो you have to qualify this JJBL's examination. Okay, and now talking about this platform of Unacademy. This platform will provide you a lot of benefits, a lot of advantages, and talking about that, you have first of all you will have the access of daily live classes, and these daily live classes have online classes going on with different educators where you can ask your doubts, you can answer in the poll, and you can have one-to-one interaction with the top educators of the Unacademy. So this is the first benefit you are going to get, that is you are going to get daily live classes, and secondly you will get live test and quizzes जहाँ पे आपको अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का, बाकी लोगों से कंपैरिजन करने का, एंड आप उनके साथ कैसे compete करो, कैसे ओवरकम करो अपने फियर को, ये सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको अपने परफॉर्मेंस इवेलुएशन का भी बेनिफिट मिलेगा. कहाँ? लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को जब आप अटेंड करोगे. ओके, along with that you will get a well structured course. ठीक है, well structured course मिलेगा आपको, प्लस कोर्सेज मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, और इन प्लस कोर्सेज पे आपको एक एक यूनिट का इंडिविजुअल डिजाइन कोर्सेज मिलेंगे आपको. ठीक है, तो आप एक कोर्स, एक टीचर के किसी एक कोर्स को फॉलो करो तो वो पूरा यूनिट आपका कवर हो जाएगा. तो आपको बहुत सारी वीडियोस अलग अलग जगह से देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप किसी एक एजुकेटर के किसी एक प्लस लेक्चर को फॉलो करो फॉर वन पार्टिकुलर यूनिट. उसमें आपको A to Z उस यूनिट में जितने पार्ट हैं सब चीज को वो एजुकेटर कवर करेगा. सो आपको वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिजाइंड कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस. दैट मीन्स एक बार आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, देन यू कैन एक्सेस जितने भी कंटेंट अवेलेबल है, लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्पेशल क्लासेस के वीडियोस, प्लस कोर्सेज के वीडियोस, ये सारी चीज़ों को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम योर सब्सक्रिप्शन आईडी. ओके, तो दीज आर द 4 बेनिफिट, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स अगर बोलो. और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बट दीज आर द most important 4 benefits. And apart from that you will also have another option or another advantage, that is of free live classes. ठीक है, and these free live classes they are special classes. okay, इसको टर्म दिया गया है स्पेशल क्लासेस, जहाँ पे जितने भी नए एजुकेटर्स ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी को. ठीक है, कोई भी नया एजुकेटर ज्वाइन किया अनअकैडमी, then he or she is going to take different special classes, different topics पे, let's say some kind of revision, या let's say it can be some kind of question practice session or some kind of
रैपिड रिविजन और रैपिड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको स्पेशल क्लासेस में मिलती हैं। ओके, सो दिस इज एन अनदर बेनिफिट जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स अलॉन्ग विद दैट जो नए एजुकेटर्स जितने भी अनअकैडमी हायर कर रहा है डेली बेसिस पे, जिन सबके पढ़ाने के तरीके अलग हैं, जिन सबके कॉन्सेप्ट समझाने के तरीके अलग हैं, तो आपको जो टीचर बेस्ट लगता है, आपको जिस टीचर से सबसे अच्छा समझ में आता है, आप उसके फ्री क्लासेस को देख के फिर आप उसके सब्सक्रिप्शन को लीजिए, फिर आप उसके प्लस कोर्सेज को अटेंड कीजिए। ठीक है, तो ये आपको एक एज अ ट्रायल के लिए आप स्पेशल क्लासेस देखिए, स्पेशल क्लासेस आपको पसंद आया देन आप उस टीचर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, उस टीचर के प्लस कोर्स को देखिए। तो ये यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ट्रायल मिल जाएगा कि आपको वो टीचर का पढ़ाई, आपको वो टीचर के कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका, सब कुछ आपको कितना सही लग रहा है। ठीक, उसके बाद फिर आप सब्सक्रिप्शन को लीजिए। और अब बात करें सब्सक्रिप्शन प्लान की, सो अगर CSIR UGC के सब्सक्रिप्शन प्लान की यहाँ पे बात हो रही है तो दीज आर ऑल प्लान्स अवेलेबल, बट फॉर CSIR UGC नेट एस्पिरेंट, अगर आप लाइफ साइंसेस की स्ट्रीम में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो देन आपको मिनिमम 12 मंथ्स तो लग जाते हैं आपके सिलेबस को कवर करने में, रिविजन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। देन आपको 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का प्लान लेना चाहिए, जिससे कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो फिर आपके पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन में कोई हर्डल नहीं आए। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का प्लान ऑन अ सेफ साइड लेना चाहिए, जो कि आपको 10,395 में मिल जाएगा अलॉन्ग विद 10% डिस्काउंट, जो कि आपको पड़ेगा 10,395 में। एंड जो 24 मंथ का प्लान है 10% डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा 15,120 पे। और ये 10% आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, जब आप मेरा कोड यूज करोगे सुरभि01। आप सब्सक्रिप्शन ले लो, स्पेशल क्लासेस अटेंड करो, देन प्लस कोर्सेज को सब्सक्राइब करो, देन आपको सब कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टेस्ट सीरीज, वीकली क्विजेज, मेगा क्विजेज, ये सारी चीजों का बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, चलिए तो अब हम आज के कोर्स पे जाते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज पढ़ने वाले हैं कि पाइरूवेट तो बन गया। ठीक है, पाइरूवेट हमारा पिछले लेक्चर्स में ही बन चुका था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एनारोबिक कंडीशन में पाइरूवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल के अंदर फॉर्मेंट हो जाता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म जैसे यूकैरियोट या फिर बहुत सारे बैक्टीरिया में आप बात करो तो वहां पे ये पाइरूवेट जो है वो एंटर कर जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है, ये TCA साइकिल होता है और यहाँ से फिर ये पाइरूवेट जो है वो जनरेट करवाता है बहुत सारे NADH और FADH मॉलिक्यूल को, और ये मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहाँ से फिर एट लास्ट ATP की जनरेशन होती है। और यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ ATP देखो तो एज कम्पेयर टू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल फॉर्मेंटेशन, तो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल के केस में जितनी ATP की जनरेशन होती है, आप जब TCA साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद जो जनरेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्वाइट हाई। ओके, अराउंड 30 to 32 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं आफ्टर दिस TCA साइकिल एंड ओवरऑल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको बहुत सारी ATP की जनरेशन होती है। सो इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेनी बैक्टीरियाज that live under the aerobic conditions will oxidize their organic fuels to carbon dioxide and water rather than being reduced to lactate or ethanol। ठीक है, जो anaerobic organism जो कि lactate और ethanol बनाते हैं, so when the organism is in aerobic condition, so in that case their organic molecule is completely oxidized into carbon dioxide and water, and this aerobic phase of catabolism, this aerobic phase of degradation of glucose is called as respiration। Okay, or precisely we can say it as cellular respiration। So what is happening in cellular respiration? Cellular respiration occurs in three major stages. So the first one is, in the first step, organic molecules, maybe it is glucose or fatty acid or some kind of amino acids, these all will go a series of reactions and finally they will yield
a 2 carbon fragment in the form of acetyl coenzyme A. ठीक है, जो भी ग्लूकोज होगा, फैटी एसिड होगा, अमाइनो एसिड होगा, ये जाएंगे एक सीरीज ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस and lastly they will generate a 2 carbon compound that is acetyl coenzyme A. This is the first step. Now in the second step, the acetyl group is oxidized to CO2 in the citric acid cycle, and much of the energy of these oxidation is released in the form of NADH and FADH. ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए फिर जाएगा TCA साइकिल में और वहां पे जाके वो CO2 बनाएगा, उसके साथ ही NADH और FADH बनाएगा. NADH FADH जो है वो हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स होते हैं और these compound get reduced while giving their protons and electrons to the electron transport system, and finally within the electron transport system there is a cyclic flow of the electron, and these electrons are finally transferred to the oxygen, and during this process there is a creation of proton gradient, and this proton gradient will help in the generation of ATP. ये पूरा का पूरा एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेप को. चलिए फिर हम देखते हैं आगे. तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो कैसे होता है. So in any cell, in any normal cell, pyruvate in the mitochondrial matrix is oxidized to acetyl coenzyme A and CO2 with the help of an enzyme pyruvate dehydrogenase complex. The enzyme responsible for converting pyruvate into acetyl coenzyme A is pyruvate dehydrogenase. ठीक है, and this reaction involved an oxidative decarboxylation process. It is an irreversible reaction जहाँ पे carboxyl group is removed from the pyruvate molecule at CO2 and the remaining 2 carbon will become the acetyl group of acetyl coenzyme A. So this pyruvate is a 3 carbon sugar. तो सबसे पहले यहाँ पे pyruvate dehydrogenase complex, it will catalyze a reaction of decarboxylation जहाँ पे ये CO2 molecule remove हो जाएगा, and now this remaining acetyl group will go and combine with the coenzyme A, and this will form a molecule of acetyl coenzyme A. ठीक है, removal of CO2 and the remaining 2 carbon will join the coenzyme A as an acetyl group, and the product we have is acetyl coenzyme A. Okay. Clear? Okay. Now this overall reaction जिसमें कि enzyme involve हो रहा है, pyruvate dehydrogenase complex, this is a complex that involves 3 different enzymes and 5 different coenzymes. इस complex में 5 coenzymes होते हैं. ठीक है, and these 5 coenzymes are thiamine pyrophosphate TPP, FAD, coenzyme A, NAD and lipoate. So the 5 coenzymes are TPP, NAD, FAD, coenzyme A and lipoate. These are the 5 coenzymes that is required for the functioning of the pyruvate dehydrogenase complex. Okay. Now, talking about this enzyme, this complex has 5 coenzymes plus 3 enzymes. इसमें 3 different enzymes होते हैं. And the first enzyme is pyruvate dehydrogenase. The second enzyme is dihydrolipoyl transacetylase. ठीक है, and the third enzyme is dihydrolipoyl dehydrogenase. आपको ये तीनों एंजाइम के नाम याद रखने होंगे और इनके सीक्वेंस भी. फर्स्ट जो है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, देन डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, देन डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज. ये 3 एंजाइम्स है.
और इन तीनों एंजाइम्स के कोफैक्टर भी आपको याद रखने होंगे। तो जो पहला एंजाइम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, उसका कोफैक्टर होता है टीपीपी। टीपीपी जो है थायामीन पायरो फॉस्फेट, वो जो होता है वो E1 के साथ इंटरैक्ट करता है। नाउ जो E2 है, E2 का कोफैक्टर होता है लिपोइड, एंड जो E3 है उसके साथ एसोसिएटेड रहता है FAD एंड NAD मॉलिक्यूल्स। So these are the cofactors and these are the enzymes: pyruvate dehydrogenase, dihydrolipoyl transacetylase and dihydrolipoyl dehydrogenase. Now we will see कि ये तीनों enzymes कैसे कैसे reaction को show करते हैं. Okay. So this reaction involves first the enzyme, that is the E1. So this E1 enzyme will catalyze the decarboxylation of pyruvate producing hydroxymethyl TPP. ठीक है, दिस इज द पाइरुवेट मॉलिक्यूल। तो ये क्या करेगा, इस COO को यहाँ से रिमूव करवाएगा और ये जो CH3CO है इसके साथ TPP कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज हाइड्रोक्सीमिथाइल, यहाँ पे एक H का ट्रांसफर हो जाएगा, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज हाइड्रोक्सीमिथाइल TPP. Okay. Now the oxidation of hydroxymethyl group will result in the generation of acetyl group. ठीक है, अब क्या होगा आपके पास, अब जो आपको हाइड्रोक्सीमिथाइल TPP है इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, एंड देन यू विल गेट अ एसिटाइल ग्रुप। आपको क्या मिल जाएगा, एक एसिटाइल ग्रुप मिल जाएगा, ये ग्रुप आपके पास मिल गया। नाउ ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H+. नाउ द H+ जो कि रिमूव हो रहा है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दिस विल रिड्यूस द डाइसल्फाइड लिंकेज ऑफ द लिपोइड. ओके, आपका जो E2 एंजाइम है वो लिपोइड के साथ इंटरैक्ट करके रहेगा। तो जब फर्स्ट रिएक्शन से जो H+ रिलीज होगा, दिस H+ विल गो एंड रिड्यूस द डाइसल्फाइड लिंकेज ऑफ द लिपोइड, और ये लिपोइड जो है वो अपने लाइक दिस इज द E2 एंजाइम और यहाँ पे लिपोइड ऐसे अटैच है डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू। तो यहाँ पे इस डाइसल्फाइड लिंकेज का ब्रेकेज हो जाएगा एंड यू विल हैव your lipoid molecule in the reduced form, and now this SH group will provide linkage to the acetyl group. So this acetyl group जो कि generate हुआ है first reaction में, this is now transferred through the thioester linkage with one of the SH group of the reduced lipoid. So यहाँ पे जो आपका CH3CO ग्रुप बना है जो फर्स्ट रिएक्शन में, वो इस SH ग्रुप के साथ थायोएस्टर लिंकेज से ज्वाइन हो जाएगा। ओके, सो यू हैव योर E2 एंजाइम, देन यू हैव योर लिपोइड इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, और यहाँ पे आपका CH3CO आके ज्वाइन हो जाएगा। So this is the product, this is the intermediate product after the reaction, second reaction. Okay. And now what happened? Now this E2 enzyme will catalyze the transfer of acetyl group to the coenzyme A. Okay. Now इस enzyme से associated एक और इसका cofactor होता है coenzyme. Now this E2 will catalyze the transfer of this acetyl group to the coenzyme A. और यहाँ पे बन जाएगा आपका coenzyme A plus acetyl group. So it is acetyl coenzyme A. ठीक है, एसिटाइल ग्रुप लिंक किया लिपोइड से विद द हेल्प ऑफ थायोएस्टर लिंकेज। नाउ द E2 एंजाइम विल कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ दिस एसिटाइल ग्रुप टू द कोएंजाइम A, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A. नाउ व्हाट हैपेंस, देन द E3 enzyme come into the action, and this E3 enzyme will result in the regeneration of disulfide oxidized form of lipoid. ये क्या करेगा, जो लिपोइड
SH फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसको वो फिर से रिड्यूस्ड फॉर्म में कर देगा। रिड्यूस्ड फॉर्म में करने के लिए ये H प्लस को रिमूव करेगा। H प्लस रिमूव होगा और ये H प्लस रिमूव होके कहाँ जाता है? फर्स्ट इट विल गो टू द FAD, so FAD get reduced into FADH2 and now this FAD will donate its H plus to NAD molecules and NAD will reduce to NADH2. So this is the cyclic reaction. E3 will catalyze the regeneration of the lipoid by oxidizing the SH group, and during the oxidation process hydrogen ion is removed and this hydrogen will combine with the FAD resulting in the FADH2, and now FADH2 will donate its hydride ion to the NAD and NAD will result in NADH2. ठीक है, तो फाइनली हमारे पास हमारा E1 TPP अपने रीजनरेट हो गया, E2 लिपोइड भी यहाँ पे अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया एंड फाइनली E3 जो है वो कैटलाइज कर दिया NADH2 और FADH2 के फॉर्मेशन को. So this is how the overall reaction look like. Pyruvate, then E1 TPP, and then this will form a CH3CO. This is the acetyl group linked to the TPP molecule. Now in the second reaction, the hydrogen will oxidize the lipoid of the E2 molecule and यहाँ पे after the formation of thioester linkage, this acetyl group is then transferred to the coenzyme A, synthesis of acetyl coenzyme A. And in the third reaction, the reduced E2 form of the enzyme is again converted into oxidized form. So this is the overall reaction. And when you see this diagram, it will like more explain you for diagram. So see this diagram. You have your pyruvate molecule, okay, and this pyruvate will go and bind to this TPP and enzyme 1 complex, and it will result in the removal of one CO2 molecule, and this TPP will bind to the remaining, and this is the structure TPP hydroxymethyl, okay. And now this TPP hydroxymethyl, it will get oxidized and this H plus group is removed and this H plus will go and reduce this lipoic acid. वो इस SH को कन्वर्ट कर, वो SS बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा SH में और फिर वन ऑफ द एसिड से जाके यहाँ पे जो एसिटाइल ग्रुप बनेगा CH3CO ग्रुप बनेगा वो जाके इस SH के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है. एंड नाउ दिस E2 will catalyze the transfer of this acetyl group to the coenzyme A. यहाँ पे आपका बन गया acetyl coenzyme A. Now this enzyme E3 will convert this reduced form of enzyme into its oxidized form again. So this enzyme E2 plus lipoid is again recycled और यहाँ पे आपका जो H plus रिमूव हुआ वो कहाँ जाएगा? FAD के पास. FAD कन्वर्ट हो गया FADH2 में. Now this FADH2 will donate its H plus to NAD and NAD get converted into NADH2. So this is all about this reaction जहाँ पे फर्स्ट आपका एंजाइम होता है E1 TPP जो कि CO2 का रिमूवल कराएगा एंड देन हाइड्रोक्सीमिथाइल जो है उसका ऑक्सीडेशन करवाएगा और बना देगा आपके पास CH3CO ग्रुप. Now this CH3CO group will go and attach to the lipoid. ठीक है, लिपोइड के पास जाके अटैच हो जाएगा with the help of thioester linkase. And now the enzyme E2 will catalyze the transfer of this acetyl group to the coenzyme A, resulting in the acetyl coenzyme A formation. And then the enzyme E3 will again convert this reduced lipoid into their oxidized form. So this is all about the reaction. This is all about the reaction of the pyruvate dehydrogenase complex. And there are three enzymes and
how they are interlinked with their 5 cofactors. Here? Okay, good. Now, after the synthesis of acetyl coenzyme A, acetyl coenzyme C cycle और citric acid cycle, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होता है, अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल की, तो दिस रिएक्शन जो होता है वो होता है, दिस रिएक्शन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में वो होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड और सिट्रेट, सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट, तो इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं. और दिस सिट्रिक एसिड हैज 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इन इट्स स्ट्रक्चर, तो दैट्स वाई उसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, so that way it is named as citric acid cycle or TCA cycle. Now if we see this reaction, this is a cyclic reaction that has 8 different steps. यहाँ पे total 8 steps होते हैं. okay, with the generation of यहाँ पे NADH की, FADH की, ATP की, CO2 की, सबकी जनरेशन होती है और 8 स्टेप्स होते हैं. सो अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो वी हैव द फर्स्ट स्टेप एज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, ठीक है. So the first reaction involves the condensation of acetyl coenzyme A with oxaloacetate to form citrate. जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, क्या बना है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो पायरुवेट से बना है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए will combine with oxaloacetate, ठीक है, और ये बनाएगा सिट्रेट. यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा, सिट्रेट बन रहा है तो एंजाइम क्या हो जाएगा, सिट्रेट सिंथेज. सिट्रेट सिंथेज एंजाइम होगा जो कि सिट्रेट का सिंथेसिस करवाएगा. दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन. oxaloacetate combines with acetyl coenzyme A and form a compound that is citric acid catalyzed by a reaction citrate synthase. So this is the first reaction. Clear? We are discussing about the citric acid cycle जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है. और ये कब होता है, जब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है, पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट एंजाइम्स E1, E2, E3. मैंने आपको इन तीनों का नाम बोला था याद करने. फर्स्ट एंजाइम का नाम क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. सेकेंड एंजाइम का नाम डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज. थर्ड का नाम होता है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है. 2 डिहाइड्रोजिनेज है, एक ट्रांसएसिटाइलेज है. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंड डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ये 3 एंजाइम हैं. इनके 5 कोफैक्टर्स होते हैं, TPP, लिपोएट, NAD, FAD एंड कोएंजाइम A. ये 5 कोफैक्टर 3 एंजाइम मिलके क्या बनाते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. और ये पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम A में. क्लियर? अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A फिर जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में. सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट अगर आप उसको बोलो. और इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो सिट्रिक एसिड होता है उसके स्ट्रक्चर में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. तो इस ओवरऑल सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं. एंड the chemical transformation involves citrate formation from acetyl coenzyme A and oxaloacetate, ठीक है.
ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन होके क्या बनाएगा, सिट्रेट बनाएगा, एंड दिस सिट्रेट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड into CO2, and finally we have all the energy after the oxidation process restored in the form of NADH2 and FADH2. Okay, so we are going to have at the end CO2 molecule, NADH2 molecule and FADH2 molecule and some amount of ATP. So these are the end product of our TCA cycle. कब, कैसे, कहाँ, कौन बनता है, ये अभी हम आगे देख लेते हैं. ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? चलिए ठीक, बढ़िया. अब हम देखते हैं एक एक स्टेप को डिटेल में. तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट. आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा सिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज. यहाँ पे सिट्रेट बन गया. अब सेकेंड रिएक्शन होगा कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल, सेकेंड रिएक्शन होगा जो आपका वो होगा फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फ्रॉम सिट्रेट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज एन एंजाइम एकोनिटेज एंड दिस एकोनिटेज विल कैटालाइज द रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट थ्रू एन इंटरमीडिएट सिस एकोनिटेट. सो आपके पास सिट्रेट है, सिट्रेट पे एक एंजाइम एक्ट करेगा एकोनिटेज. ठीक है, एकोनिटेज ऐड करेगा और वो बनाएगा सबसे पहले सिस एकोनिटेट. एंड नाउ द सिस एकोनिटेट is converted into isocitrate. So in this reaction overall citrate is getting converted into isocitrate with the help of enzyme aconitase. और इस बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है सिस एकोनिटेट. तो आपको याद रखना है कि सिट्रेट पे एक्ट करेगा एक एंजाइम एकोनिटेज एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट सिस एकोनिटेट. ठीक है, दिस सिट्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट. हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया आइसोसिट्रेट, जो कि सेकेंड प्रोडक्ट है. फर्स्ट प्रोडक्ट इज द सिट्रेट, second one is the isocitrate. Okay, now in the third reaction oxidation of isocitrate to alpha ketoglutarate. अब ये आइसोसिट्रेट जो है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट. तो शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार अल्फा KGA भी बोलते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट. With the help of an enzyme isocitrate dehydrogenase. So this enzyme isocitrate dehydrogenase will catalyze the oxidative decarboxylation of isocitrate to form alpha ketoglutarate. आपका जो आइसोसिट्रेट है उस पे एक्ट करेगा एक एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पे होगा आपका एक डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 रिलीज होगा एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा. यहाँ पे H भी रिमूव होगा एंड दिस H विल गो एंड कंबाइन विद NAD मॉलिक्यूल और यहाँ पे आपका बन जाएगा NADH2. ठीक है, यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बन गया. सो दिस आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज विल कैटालाइज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. मीन्स एक H+ का रिमूवल हो जाएगा और एक CO2 का रिमूवल हो जाएगा और फाइनली आपके पास बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट. So this is the first three step. In the first step, oxaloacetate combined with acetyl coenzyme A to form citrate with the help of citrate synthase. Simple सा reaction है.
Now in the second reaction, the citrate molecule react with the enzyme aconitase, and via the formation of an intermediate cis aconitate, this citrate gets converted into isocitrate. ठीक है, एक एंजाइम है इकोनिटेज जो कि कैटालाइज करेगा कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट इनटू आइसोसिट्रेट वाया एन इंटरमीडिएट सिस एकोनिटेट. इतना ही याद रखना है आपको. नाउ in the third reaction, this isocitrate will get converted into alpha ketoglutarate with the help of enzyme isocitrate dehydrogenase. And this dehydrogenase enzyme, what it will do, it will oxidize the isocitrate molecule along with decarboxylation. So this is an oxidative decarboxylation reaction where there is removal of one CO2 and there is removal of H plus ions. और ये H प्लस जायन NAD के साथ जाके कंबाइन करेंगे, बनाएंगे NADH2. So in the third reaction there is formation of one CO2 and one NADH2 molecule with the conversion of isocitrate to alpha ketoglutarate. तो हमारे पास थर्ड स्टेप के बाद जो कंपाउंड है वो है अल्फा कीटोग्लूटारेट. इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ स्टेप पे. थर्ड स्टेप तक क्लियर है सबको? थर्ड स्टेप तक क्लियर है सबको? 3 स्टेप 3 प्रोडक्ट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, alpha ketoglutarate. Okay, now we have the fourth step, that is oxidation of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A, and this is also a oxidative decarboxylation process, means removal of CO2 and hydride ion. So in this reaction, the enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase, it is going to remove one CO2 molecule and it will going to oxidize the alpha ketoglutarate and result in the formation of succinyl coenzyme A. तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो अल्फा KGA है, alpha KGA will undergo decarboxylation and oxidation reaction, जहाँ पे CO2 और H plus remove हो जाएगा और वो बना लेगा succinyl coenzyme A. Okay, enzyme here is alpha ketoglutarate dehydrogenase. जहाँ पे भी H plus का removal होगा, enzyme हो जाएगा dehydrogenase. And this H plus will go and combine with NADH2, NAD and form NADH2. So this is the fourth step where the final product is succinyl coenzyme A. Okay, the fourth step, the product is succinyl coenzyme A. Now in the fifth step, this succinyl coenzyme A gets converted into succinate. Okay, gets converted into succinate with the help of an enzyme succinyl coenzyme A synthetase. Succinyl coenzyme A get converted into succinate with the help of enzyme succinyl coenzyme A synthetase. This is synthetase, not synthase. Okay, succinyl coenzyme A synthetase, and we have your product as succinate. So this is at the end of the fifth step. Now in the sixth step, again this succinate will get oxidized into fumarate. Okay, this succinate will get converted into fumarate. Oxidized means H plus is removing. So the enzyme here is succinate dehydrogenase. Enzyme here is succinate dehydrogenase. And in this case, the H plus which is removing, the H plus which is going out, this H plus will combine with the FAD molecule and it will form a FADH2. So in this step, where there is synthesis of fumarate from succinate, this is an oxidation reaction, okay, in which the succinate will lose H plus and get converted into fumarate, and
and this H plus is accepted by the FAD molecule, and there is a synthesis of FADH2. So at the end of the sixth step, we have our product as fumarate. Okay. Now we have our seventh step, where fumarate is converted into malate with the help of enzyme fumarase. This is a simple step. The enzyme fumarase will catalyze the conversion of fumarate into malate. So this is the seventh step. And now the last step, in the eighth step, this malate is converted into oxaloacetate, and this reaction is catalyzed by malate dehydrogenase, and this is also an oxidation reaction, means H plus is removing, and this H plus will go and combine with NAD plus and get converted into NADH2. Okay. The last step, malate will get converted into oxaloacetate with the help of enzyme malate dehydrogenase. So there is generation of one more NADH2 molecule. So this is the overall 8th step. And now if we conclude, so here is the overall reaction. यहाँ पे this is the first step हमारा, where acetyl coenzyme A combined with oxaloacetate and synthesize the first product, that is citrate. And here we have our enzyme citrate synthase. Okay. Now this citrate gets converted into isocitrate via an intermediate cis aconitate. ठीक है, यहाँ पे cis aconitate बनता है, enzyme involve होता है aconitase, and this will get converted into isocitrate. Now this isocitrate will oxidized and will undergo a reaction of oxidation plus decarboxylation. ठीक है, oxidation मतलब removal of H plus, and this H plus will go and bind to NAD plus, and NADH is formed, and this decarboxylation process will result in the removal of one CO2. So in the third step, isocitrate gets converted into alpha ketoglutarate with the formation of one CO2 molecule and one NADH molecule. So one NADH molecule आपका बन गया किस स्टेप में? थर्ड स्टेप में. चलिए. Now in the fourth step, this alpha ketoglutarate gets converted into succinyl coenzyme A with the help of enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase. This is also an oxidation and decarboxylation reaction. Means यहाँ पे भी एक CO2 रिलीज होगा और एक NADH बनेगा. So fourth step में भी आपका एक NADH molecule बन रहा है. Now in the fifth step, succinyl coenzyme A gets converted into succinate. ठीक है, यहाँ पे enzyme involve होता है succinyl coenzyme A synthetase, and during this reaction one molecule of GTP is formed. GTP is also a source of energy, same as ATP. Okay, so in case of ATP, the nitrogenous sugar is adenine, rest all is same. And in case of GTP, the nitrogen base is guanine. Rest all ribose sugar and phosphate molecules are same. Bonding will be same, only the nitrogen base is different. So during this process, during the synthesis of succinate from succinyl coenzyme A, one ATP is released. So during the fifth step, there is the synthesis of one GTP, or we can say one ATP. Now, in the sixth step, there is conversion of succinate into fumarate with the help of enzyme succinate dehydrogenase. So, dehydrogenase enzyme means removal of H plus, and this H plus will go and
combined with FAD molecule, and then there is the formation of FADH2. So in the sixth step, there is formation of one FADH2. Okay. Now, in the seventh step, fumarate is converted into malate with the help of enzyme fumarase. This is a simple reaction. Now, in the last step, we have malate conversion into the oxaloacetate along with the synthesis of one NADH2. मीन्स यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है मैलेट डिहाइड्रोजनेस और एक NADH2 बन रहा है. मीन्स एट स्टेप में भी आपका एक NADH बन रहा है. सो आप ओवरऑल देखो, ओवरऑल NADH2 कितने बने? 3. ओवरऑल ATP कितना बना? 1. एंड ओवरऑल FAD कितना बना? 1. सो दिस इज द ओवरऑल रिजल्ट. Okay, so in the step 1, 3 and 4 are irreversible reactions and rest all are reversible. ठीक है. and also आपके पास step 5 में एक ATP बन रहा है, step 3, 4 और 8 में एक NADH2 बन रहा है, step 6 में एक FADH2 बन रहा है और 3 और 4 में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. अभी ये सारा कुछ हमने इस रिएक्शन में देख लिया कहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है. And this is an overall summary for the overall citric acid reaction. And at the end of one Krebs cycle, we have 3 NADH2 molecule, 1 FADH2 molecule, and 1 ATP molecule. Okay. Any confusion? Any doubt? Anybody? Okay, clear? Chali. So this is all about the citric acid cycle, and now the last part we have is the regulation part. So how we are going to regulate the Krebs cycle, how we are going to regulate the conversion of pyruvate into acetyl coenzyme A. So all the steps are under regulation, allosteric regulation. Okay. So the PDH complex catalyzes the conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A that will enter into the Krebs cycle, is allosterically regulated. So this enzyme pyruvate dehydrogenase complex, it is in allosteric regulation. And what are the factors जो इसको regulate करते हैं? So this PDH complex is allosterically inhibited when ATP ADP ratio or NADH NAD ratio or acetyl coenzyme A and coenzyme A ratio are high. ठीक है, मतलब कि जब ATP ADP रेशियो ज्यादा है, मीन्स ATP का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया और NADH NAD प्लस का जो रेशियो है वो भी ज्यादा है, मीन्स NADH ज्यादा है और एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोएंजाइम ए का रेशियो भी बहुत ज्यादा है, मीन्स एसिटाइल कोएंजाइम ए ज्यादा है. So in all these three cases, this particular ratio, when this ratio is high, then this will going to allosterically inhibit the PDH complex. Okay, this is ATP molecule or this NADH molecule, these are going to bind to this PDH complex and going to inhibit their action, going to induce certain kind of conformational change within themselves, within the enzyme active site, and then it will inhibit their reaction. So in case when these ratio decreases, this means that the amount of ATP present in the cell वो कम हो जाएगा. So in that case the allosteric activation will occur. तो जब ATP का अमाउंट, ऑफ कोर्स जब ATP की अमाउंट सेल में बहुत ज़्यादा होगी, मीन्स सेल को क्रेब्स साइकिल या सेल को ग्लाइकोलिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ATP बहुत ज़्यादा है, ATP का कंजम्पशन कम हो रहा है, तो सेल को ATP ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए. तो इन दैट सिनेरियो आपका जो भी क्रेब्स साइकिल है, आपका जो भी पायरुवेट का डिग्रेडेशन है, आपका जो ग्लाइकोलिसिस है, उन सारे प्रोसेसेस को बंद होना पड़ेगा. और बंद होने का एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है. कैसे? ATP ज़्यादा है, ATP जाके एक एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा, एंड आफ्टर दिस बाइंडिंग
there is some kind of conformational change in the pyruvate dehydrogenase enzyme, which will result in the inactivation of this enzyme. Or when the amount of ATP become low or decrease, so in that case इस एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाएगा. एलोस्टेरिक इनहिबिशन जो है पहले, वो एलोस्टेरिक एक्टिवेशन हो जाएगा. जब एटीपी कम हो जाएगा तो एडीपी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा. नाउ दिस एडीपी विल गो एंड एक्टिवेट द पीडीएच कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ सिमिलरली अगर हम सिट्रिक एसिड साइकिल की भी बात करें तो इसका भी रेगुलेशन होता है 3 बेसिक स्टेप पे. ओके, so each of the 3 strongly exergonic step in the cycle, those are catalyzed by enzyme citrate synthase, isocitrate dehydrogenase and alpha ketoglutarate dehydrogenase. ये सारी रिएक्शन की जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है, ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो हाईली नेगेटिव होती है. ओके, ये इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं और इनकी डेल्टा जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है. मीन्स इस पार्टिकुलर रिएक्शन को अचीव करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है वो ज्यादा होती है. सो दीज कैन आर द रेट लिमिटिंग स्टेप्स. जो रिएक्शन स्लो होता है या जो रिएक्शन को अचीव करने के लिए एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा लगती है, तो वो सारे रिएक्शन जो होते हैं वो रेट लिमिटिंग रिएक्शंस, रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं. ठीक है, सो इन तीनों रिएक्शंस को हम स्टॉप कर सकते हैं. एंड कैसे करेंगे? सो द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट फॉर सिट्रेट सिंथेज. जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम होता है उसका सबस्ट्रेट क्या होता है? एक तो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक होता है ऑक्जेलो एसिटेट. तो जब इन दोनों की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, तो एट दैट पॉइंट दिस एंजाइम गेट्स इनएक्टिवेटेड. ओके, और सिमिलरली अगर आप बात करो जो दो एंजाइम है आइसोसिट्रेट एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, इनका एंड प्रोडक्ट होता है NADH. ठीक है, तो जब NADH का जो कंसंट्रेशन है वो सेल में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इन दैट केस दिस NADH विल गो एंड allosterically inhibit these two enzymes. So end product is inhibiting the function of the enzyme. end product का concentration अगर ज्यादा हो गया तो वो enzyme की activity को low कर देगा. So this is how these enzymes are regulated. And along with that, so this is the product inhibition or we can say that feedback inhibition. जब किसी reaction का, let's say A, B, C, D, this is a reaction and this is enzyme A1, A2 and A3. So when the product is inhibiting the enzyme function, enzyme activity, तो इसको हम product inhibition या फिर feedback inhibition बोलते हैं. ठीक है, तो succinyl coenzyme A will inhibit the alpha ketoglutarate. ठीक है, succinyl coenzyme A क्या है? Product है. So this will going to inhibit its enzyme. Similarly, citrate will block the citrate synthase. ऑक्जेलोएसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए को मिला देते हैं तो हमारा सिट्रेट बनता है. सिट्रेट इज द प्रोडक्ट और यहाँ पे एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेज. So this citrate will go and allosterically inhibit its enzyme. Also, ATP will inhibit the citrate, and because ATP is also a product, so it will going to inhibit its enzyme. Okay. तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में बात करते हो, अंडर नॉर्मल कंडीशन द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस and citric acid cycle are integrated so that only as much glucose is metabolized to pyruvate that is needed in the citric acid cycle. So all these processes, अगर आप ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हो, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हो, ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरुवेट बनता है, पाइरुवेट के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, देन यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल होता है. एक्सक्यूज मी. तो ऑल दीज 4 प्रोसेसेस आर इन रेगुलेशन. ठीक है, और ये सारे इंटीग्रेटेड होते हैं. दैट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो उतना ही होगा, उतने ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होंगे पाइरुवेट में और उतने ही पाइरुवेट ब्रेक डाउन होंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जितनी की सिट्रिक एसिड साइकिल होने की जरूरत होगी.
जितने की एटीपी की जरूरत होगी, जितने ही अमाउंट ऑफ एटीपी चाहिए, उतने ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, उतना ही सिट्रिक एसिड साइकिल, उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स में होगा। तो दीज ऑल प्रोसेसेस आर इंटरकनेक्टेड। अगर ग्लाइकोलिसिस हाई रेट में हो रहा है, पायरुवेट ज्यादा बनेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल ज्यादा होगा। अगर सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स बहुत ज्यादा हो गए तो इसको रोकना है, तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन होगा सिट्रिक एसिड साइकिल का, that will definitely going to inhibit the process of glycolysis also. So these four or this four reaction all are interconnected. एक का स्पीड बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ेगा, एक का इनहिबिशन हो रहा है तो दूसरे का भी होगा, बिकॉज ये सारे इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। एक का जो रिएक्टेंट है वो दूसरे का प्रोडक्ट है, जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड का क्या है, रिएक्टेंट है। तो दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड प्रोसेस, और इनका रेगुलेशन जो होता है वो इंटरकनेक्टेड मैनर में ही होता है। तो एट लास्ट आज हमने क्या क्या पढ़ा? सो दिस इज द टाइम फॉर कंक्लूजन। सो इन टूडेज लेक्चर फर्स्ट हमने पढ़ा द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें कि 3 एंजाइम्स होते हैं। ओवरऑल रिएक्शन जो होता है वो काफी सिंपल सा होता है। पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। इसमें 3 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, E1 that is pyruvate dehydrogenase, E2 that is dihydrolipoyl transacetylase, E3 that is dihydrolipoyl dehydrogenase, and 5 कोफैक्टर्स होते हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, TPP, lipoid, FAD, NAD and coenzyme A. These are the 5 cofactors, these are the 3 enzymes, और इनका overall reaction भी आपको याद रखना है। And along with that you have to remember that यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A, and this acetyl coenzyme A will now enter into the TCA cycle, and first reaction में क्या होता है, acetyl coenzyme A combine with oxaloacetate and form citrate, and now ये citrate जो है फिर और further products में convert होता है। एक 8 step process होता है। TCA क्या है, एक 8 step, इसमें 8 different steps होते हैं, और finally ये different steps में जाके different step पे different enzymes के help से at last ये क्या product बनाता है, इसमें बनता है 1 molecule of ATP or you can say GTP, 3 molecules of NADH2 and 1 molecule of FADH. From 1 molecule of acetyl coenzyme A आपके पास इतना बनेगा, 1 ATP, 3 NADH2 and 1 FADH2. And lastly we have seen the regulation of TCA cycle, जहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि PDH हार्मोन को कैसे रेगुलेट करेंगे। PDH हार्मोन को अगर एलोस्टेरिकली रेगुलेट करना है तो when the concentration of ATP to ADP, or you can say when the concentration of NADH to NAD, or you can say the concentration of acetyl coenzyme A to coenzyme A is very high, so these molecules will go and allosterically inhibit the PDH complex, और यहाँ पे जो PDH हार्मोन का एक्शन है वो रुक जाएगा। एंड इसके अलावा जो TCA साइकिल के रेगुलेशन है वो 3 डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू भी होते हैं। पहला होता है सिट्रेट सिंथेस, दूसरा होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज, एंड थर्ड होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 एंजाइम भी हाईली रेगुलेटेड होते हैं। This is all about the TCA cycle and conversion of pyruvate into acetyl coenzyme A and their regulation. Okay, so this is all for today's class, and thank you so much guys, and please subscribe the channel Let's Crack CSI at UGC Net and click on the bell icon also. And if you are going to get the subscription for plus
एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो तो आप मेरा कोड यूज करो SURBI01 टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. Okay, thank you so much. And for tomorrow's class, we are going to have a discussion on oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. In tomorrow class, we are going to discuss this. जहाँ पे हम हमारा जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, इसके जो प्रोडक्ट है NADH2, FADH2, they are finally going to donate their H plus and electrons to the electron transport system, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक फ्लो होता है एंड उसके साथ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है एंड दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ ATP. और ये ओवरऑल प्रोसेस ATP का जनरेशन कैसे होता है, वो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि हम कल देखेंगे पूरा डिटेल में. ओके, so that is all about today's class. Thank you so much. Take care everybody.